کہتی ہے کہ افغان ریفیوجیز کا ڈپارٹمنٹ، نیشنل ہائی وے PTCL اور اوورسیز پاکستانیز، سول ایویشن اتھارٹی، وابڈا، سوئٹزرلینڈ گیس اور جو ٹیلی کام آ جاتا ہے، اس میں کہتی ہے کہ یہ بھی گورنمنٹ کے انڈر میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کا گراؤنڈ ہے کہ 240 اور 242 کو رانگلی انٹرپریٹ کیا گیا ہے ججمنٹ میں، تو وہ درست نہیں ہے اور ججمنٹ درست ہے. اس کے بعد بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ آبزرویشن آتی ہے. سپریم کورٹ فرماتی ہے سیریل نمبر 1 افغان ریفیوجیز کے میٹر میں کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے، آل دی کمشنرز اینڈ کمشنرز ورک انڈر دی منسٹری آف اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجنز، یعنی یہ بھی گورنمنٹ میں آتا ہے. پھر کہتی ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی 6 آف دا 7 ممبرس آف نیشنل ہائی وے کاؤنسل are either representative of the federal government or nominated by the president. PTCL میں کہتی ہے federal government owns majority of the shares of PTCL SRO 453/1 of 2006 dated 9/2006. پھر OPF میں کہتی ہے کہ board of governors is comprised of the relevant minister and such other members as the government nominates. Rule 2GG of the Immigration Rules 1979. All the operations of OPF are managed by the Board of Governors, taking into account the policy of direction issued by the government. Then SLIC directors are employed of the federal government and chairman of the SLIC is also nominated by the federal government. Then civil aviation mein 5 of the 6 members of the board are either representative of the federal government or are nominated by its sections 4/2 and 14 subsection 1 of the Pakistan Civil Aviation Authority Ordinance 2021. Additionally, the directives issued by the federal government on the matters policy are being binding on civil aviation. وابڈا میں بھی کہتی ہے کہ the appointment and removal of the administrative control کو define کر رہی ہے سپریم کورٹ. The appointment and removal of the chairman and members of the WAPDA under control of Government Section 4(1) and 6 Pakistan Water and Power Development Authority 1958. پھر SSGC Government of Pakistan directly and indirectly owns the majority of the shares of SSGC. اور جو Trading Corporation of Pakistan ہے وہ directors TCP are appointed and hold office during the pleasure of federal government. Article 92 of the Memorandum and Article Association TCP, shares of TCP are owned by the Ministry of Commerce. یعنی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول گورنمنٹ کا ہے، تو آپ کا یہ گراؤنڈ جو ہے اس سے وہ ڈس ایگری کرتی ہے. پھر اس کے بعد پیج نمبر 19, 20 and 21 جو ہے اس میں بورڈ جو 19, 20 and 21 میں جو وائلیشنز ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ویدر آرٹیکل 240 اینڈ 242 جو ہے اس کی وائلیشنز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں مبشر رضا جعفری کے کیس کا ریفرنس دیا جاتا ہے 2014 SCMR 949 اور دوسری ججمنٹس کا. 21 میں بھی یہی چلتا ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ وائلیشنز کیا ہیں. سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ IB، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، OPF اور SLIC ان میں کچھ اپوائنٹمنٹس کے دوران وائلیشنز کی گئی ہے. کون سی وائلیشنز ہیں؟ اپوائنٹڈ جو انٹیلیجنس بیورو ہے اس میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اپوائنٹڈ انٹیلیجنس بیورو آفیشلز آر اپوائنٹڈ وداؤٹ ایڈورٹیزمنٹ اینڈ ٹیسٹ اینڈ انٹرویو. FST and Honorable Supreme Court dismissed their appeals petitions before reinstatement under Act. پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے بارے میں کہ they were appointed without advertisement and competitive process. اور OPF کے بارے میں کہتی ہے سپریم کورٹ کہ some employees were appointed on contract without observing cordial formalities, others were terminated on the competition of respective projects
and one was terminated and disciplinary proceedings. फिर SLIC के बारे में वायलेशन कहती है कि they were the employees of SLIC were appointed without following cordial formalities. फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ के बारे में कहती है कि दे वर अपॉइंटेड विदाउट एडवर्टीजमेंट एंड रूल्स. फिर कहती है सुप्रीम कोर्ट के वापडा एम्प्लॉयज़ वर टर्मिनेटेड एज दे वर इरेगुलरली अपॉइंटेड. फिर SSGC एम्प्लॉयज़ वर हायर्ड ऑन स्पेशल प्रोजेक्ट्स ऑन टेम्पररी असाइनमेंट्स एंड वर डिक्लेयर्ड redundant after completion of projects लिखा हुआ है, competition लिखा हुआ है. और TCP employees were terminated on winding up of their organizations which subsequently merged with TCP. ये पैरा नंबर 19 पैरा नंबर 19 में सुप्रीम कोर्ट फरमाती है कि ये वायलेशंस हुई हैं ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स. फिर 22 में आ जाती है सुप्रीम कोर्ट ड्यू टू अबव वायलेशंस इन द अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट लॉज ड्यू टू 3 रीजंस. सुप्रीम कोर्ट कहती है क्योंकि ये अपॉइंटमेंट में इरेगुलरिटीज थी, वायलेशंस थी, लिहाजा अब पार्लियामेंट को हक नहीं था कि ऐसे जो है वो मुलाजमीन को दोबारा से रिलीफ दे इस एक्ट के तहत या ऐसा कोई एक्ट पास करे. नंबर 1 रीज़न क्या था? एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन परमानेंट, टेम्पररी, रेगुलर और एडहॉक बेसिस और अदरवाइज अगेंस्ट रेगुलर और टेम्पररी पोस्ट सेक्शन 4A. Number 2, employees appointed on contract basis against a regular or temporary post section 4B. और फिर नंबर 3 पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि employees appointed as any type of trainee section 4D. ये जो reasons है ये कहा गया है कि few examples of types of employees who were required to be regularized under the act are listed below for reference. ये पैरा नंबर 22. उसके बाद पैरा नंबर 23 में स्टेट पब्लिक फंक्शनरीज आर रिस्पॉन्सिबल टू द नेशन, तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए. फिर पैरा नंबर 24 में बेनिफिशरी जो हमारा ग्राउंड था C, जो हमारा ग्राउंड था उसको एड्रेस करती है सुप्रीम कोर्ट के बेनिफिशियरी एम्प्लॉयज कॉन्स्टिट्यूट ए डिस्टिंक्ट क्लास. उसमें फिर कहती है कि इसमें भी कोई वायलेशन नहीं है और उसके 3 रीजंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट देती है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और इस वजह से इस ग्राउंड को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती. और ये पेज नंबर 20 पैरा नंबर 24 फिर 25, 26 और 28 तक जाता है. कुछ जजमेंट्स का इसमें सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस देती है. सेक्शन 2 को रिप्रोड्यूस करती है जो एक्ट का है और उसमें 28 में सुप्रीम कोर्ट कहती है द एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस्ड हेयरिन मेक्स इट क्लियर दैट द फीचर्स ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द persuaded the court inter alia to declare 2007 ordinance ultra virus the constitution also exists in the present case. These are as follows. Number 1, the act discriminates against similarly placed persons who were dismissed, removed or terminated from service in the periods prior to 1/11/1996 and subsequent to 12/10/1999. Number 2, the preamble of the act coupled with its substantive provision do not disclose the reasons for reinstatement of only those employees who had been dismissed, removed or terminated from service during the specific period of 1/11/1996 till 12/10/1999. और तीसरा रीजन देती है कि the act was enacted to achieve a specific object and purpose, namely
the restatement of those employees who had been initially appointed during PPP tenure. यानी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि क्योंकि ये जो एक्ट था वो सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को रिलीफ देने के लिए बनाया गया कि जो पीपल्स पार्टी ने अपॉइंट किए थे और उनके जो अपॉइंटीज थे उनको टर्मिनेट किया गया, तो उन्होंने अपने जो लोग थे जिनको अपॉइंट किया और जिनको फिर टर्मिनेट किया गया तो उनको दोबारा रिलीफ देने के लिए ये एक्ट लाया। और ये डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 25 जो है गारंटी करता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसकी वायलेशन है। उसके बाद पैरा 30 में जो हमारा डी का ग्राउंड था, इससे पहले ये आर्टिकल 25 गुलशन बीबी वर्सेस मोहम्मद सादिक PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट